research interest you have to write before for the application. Okay. So research interest, most of the time, you should not fake your interest. So whatever you have, because in the interview, they are very, very smart. The PIs are very smart. They will ask you one question and you are gone. They will know that you are faking it. So write what you know, write what you are willing to pursue based on your previous knowledge. Okay. Right, what you find in that particular lab. Suppose you have chosen one's lab, and you know that, okay, means if I want to join RCB, I want to join these two labs, or these means either this lab or that lab. So your thought should be very clear, like, okay, means my research interest, my experience, and everything will sum up to target that lab. Okay. So you can change your research lab based on research interest based on the different labs. Okay. Because I suppose my experience was initially I was doing the data analysis like RNA-seq and genomics, but in this program, because of it is a GSK funded, so I was very clear that they will look for a candidate who also can do drug designing or drug discovery part. Okay. So based on my previous experience, I formulated my research interest this way, that okay, I know all these things, but I want to pursue these things. Okay. So that way I have formulated my research interest. Sure. So first thing, writing the research proposal is itself a humongous task. But I will simplify it down in a few steps as according to my experience. So basically, a research proposal starts with a very, an idea that you want to explore, something that you are curious about. So once you are reading literature and you find that this field of study is not yet been explored. For me, it was circadian biology and its connection with immunology. Okay. So that was not that much explored. So I read up on literature survey first, like what kind of work has been done. So that is the first step, that reading on the literature. Then the next step that you do is that you have some meetings with the with your guide, who will be ready to support you. And then you devise some objectives that you will be using. Okay. So in objectives, it has objectives that what experiments you will be conducting, and then what kind of requirements in terms of consumables that you will be require, what instruments you will require. And once you are done with that, then you start writing your proposal. It has introduction. Then the second section will be of literature survey, like what kind of information has already been published in the papers. Okay. And then you write about your objectives, like what is your hypothesis, and how we will be proving that this hypothesis is correct. And for that you have objectives and the methodology. So that is in short how you write a research proposal. SOP and research proposal. So it's like, you need to be specific to the lab that you are applying to. So if you're applying to like 10 labs, you might have to write 10 different kinds of SOPs. But in my case, I would say that I was aiming for same kinds of lab, which is like effector biology and in-plant immunity. So there I kept like one template. So where I would like explaining who I am, what I studied and why I studied. So I explained them like why I studied botany in the first go itself. So because why you studied, what you mentioned in that column? So it was like when I was doing my grade 11th and 12th, I was more fascinated by the plants that I was like dissecting, and I was more fascinated about the diversity that we have in plants. I'm sure that we have a lot of diversity in zoology, but when it comes to plants, you have like algae and fungi and bryophytes, pteridophytes, and then you have like microscopic features that you can see. Now we cannot dissect a lot of animals because of the regulations in India,
but you can do dissections in plant sciences. So that's how I started liking plant sciences more. And then when I did my bachelor's in botany, and then I mentioned that how I came across, like, I started liking plant immunity. So there I explained about, okay, there was like one trip that we went. So we have like college excursions, right? Botanical excursion or zoological excursions. So I mentioned about one of the botanical excursions that we had in Uttarakhand, and there we saw some lower plants and then fungus infecting them, and then the interactions that they were having. And I was so fascinated about that. You need to let them know that you are happy about science, you are excited about science. You need to let them know. So that's how I told them that, okay, I was interested with that interaction that was happening. And that's how I pursued more into my plant sciences. But then now you need to explain them, why did you do a master's in biotech? Because it was totally classical. This is totally applied. How did you do the switch? So you can explain that as well. So then in that sense, I mentioned, okay, that I did my classical things and then I saw these stuffs, and I wanted to know more into the molecular aspects of these interactions. And that's how I thought that, okay, I need to learn those skills in order to understand those molecular things that are happening inside that interaction. So that's how I came to do a biotech master's. And in biotech master's, because I saw those interactions, I plan to do a dissertation in this lab. And then after doing a dissertation in this lab, now I feel that I'm confident in studying more about this. Okay. So that's how you have to It's like link up your the stories. experience only. It's like your experience Yeah. you have to share, right? Okay. Yep. So there's any word limit regarding this for SOP? Yeah, there is. At times they say that it has to be like 1 to 2 pages. At times they say it has to be like 1,000 words or 2,000 words. They will definitely mention. So this story I need to cut down every time based on the um, word Yeah. limit that they So say. when you Because are writing, yeah, yeah. Continue, please. because I need to mention about my skills also, right? I don't just want them to know the story. I'm not doing a PhD in English, Storytelling. or yeah, I'm not doing a PhD in storytelling. Yeah, so I need to tell them that based on these things, then I plan to do a dissertation in this stuff. And in my dissertation, I did these things, and these are the skills that I have now. And I think that I want to apply these skills into your project because that fascinates me. Okay. And then you will say that in your lab, this project fascinates me. And then you need to tell them that why it fascinates you, what you can do about that project. You need to mention that as well. So when you are Because, writing first time to the PI, you have to mention all these things first time when you okay, so what I did was like, I kept like a general short mail. So in a short mail, you can just let them know that you are this person from this university, and you have done your master's in this thing, and you are seeking a PhD position under them. And then you can say, please find attached a PDF containing my cover letter, my CV, sorry, and then you can mention that I have these degrees as well. So every time when I was like mailing, I was giving them my cover letter, my recent CV, my bachelor's and master's transcripts, and my degrees. Okay. So these things were going hand in hand because it's very rare that they will see your mails, right? So if they are seeing your mail, you want them to see everything in one go. You Yeah. don't want to keep it like a chat, right? That Yeah. okay, please send me your degree. Or, okay, I am sending your degree. It's not like that. You're sending them yourself as a whole profile. They need to know about you as a person together. And So if I you would suggest just send all the things together. तो एसओपी लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये मत लिखना, मतलब कुछ कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नोज है, ट्राई करना कैंसर एसओपी ना लिखे, क्योंकि कैंसर एक बहुत ज्यादा रिसर्च में आने वाला टॉपिक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम होता है। तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको बहुत साउंड नॉलेज चाहिए होता है लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एसओपी कोई ऐसा इंसान पढ़ ले जो बहुत अच्छा कैंसर फील्ड से या उसी फील्ड में कुछ काम करे या स्टेम सेल से कुछ काम कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है।
उतना नॉलेज रखना इज इम्पॉसिबल हमारे इस लेवल में आके। तो वो एक थोड़ा डेंजर जोन है, अब अवॉइड करना अगर उसमें से ना लिखो तो नेक्स्ट एक चीज है कि ड्रग डिलीवरी या फिर ड्रग फाइंडिंग, मतलब ये नहीं कि मैंने एक ऐसा ड्रग लिख दिया कि हाँ ये बीमारी है इसके लिए मैं ये ड्रग यूज करूंगा बस खत्म, बीमारी गायब हो जाएगी, ये भी लिखना अवॉइड, क्योंकि ड्रग्स में भी बहुत साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये दोनों चीज में बिल्कुल एसओपी अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए उस एरियाज में एसओपी लिखने से। जो इजी एरियाज है कि आप कोई प्रोसेस जो हो रहा है, कोई मैकेनिज्म बॉडी में, जैसे कि मेरा अपना एसओपी प्रोटीन फोल्डिंग डिसऑर्डर्स के साथ था, तो ऐसे कोई नॉर्मल सी मैकेनिज्म जो है या फिर कोई वायरस आपको इन्फेक्ट कर रहा है, तो आप वायरस का किसी पार्ट के, मतलब कोई ड्रग नहीं लेकिन आप वायरस से फॉर एग्जांपल स्पाइक प्रोटीन, जैसे कि कोविड में हम सबको पता है, तो कुछ आप ऐसा बता पाओ कि हम स्पाइक प्रोटीन के साथ कुछ छेड़खानी या कुछ बाहर से कुछ करेंगे कि स्पाइक प्रोटीन अटैच नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा मतलब जो मॉलिक्यूलर बेसिस में हो वैसा वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग इम्यूनोलॉजी पे भी लिखते हैं, तो और हमेशा उसको ट्राई करना कि जो भी मेरा एसओपी होगा उसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन होना भी चाहिए कि नहीं। जैसे मेरे केस में मेरा जो एसओपी था वो मैंने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में लिखा तो था, लेकिन मेरा मेजर फोकस ये था कि हैवी मेटल स्ट्रेस जो होता है, क्योंकि आजकल मेरा आर्सेनिक पे था, तो आजकल इतना पोल्यूशन ज्यादा है, तो आप आर्सेनिक को अगर किसी तरह से कॉम्बैक्ट कर सको, तो वही कि आपका कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन बन पा रहा है कि नहीं। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन अगर कुछ रिलेट ना हो पाए कि दुनिया की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाओ, तो तुम्हारा उतना मतलब तुम्हें ले लेंगे शायद, बट देन क्योंकि मैंने सुना था कि तीनों जगह से कॉल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब TIFR के तीनों ब्रांचेस से, तो मेरा एसओपी तीनों ब्रांचेस में ही एक्सेप्टेड था, तो इसीलिए वो थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन रखना जरूरी है। और ये बात हुआ, और उसके अलावा आपको जब आप लिखते हो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना, और जितना ज्यादा कोशिश करना कि मैं अपना एसओपी खुद से ही लिखना, मतलब लिखने की कोशिश करती थी कि हाँ आप चेक करवा सकते हो अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से, पर ये नहीं कि उनके आइडियाज किसी और के आइडियाज सुनकर अपना एसओपी लिख दिया, क्योंकि जितना आप खुद सोच के, तो क्योंकि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको भी पता है कि एक बीएससी का बच्चा कितना ही अच्छा एसओपी लिख पाएगा, एक प्रोफेसर लिख के देगा तो उसका एसओपी बहुत हाई फाई चला जाएगा। तो वो बीएससी का बच्चा जिस लेवल में हो सकता है, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में आप लिखो और उसको लॉजिकली लिखो। पैराग्राफ, मैंने जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था पूरा एसओपी बैकग्राउंड की, ये किया मैंने तो इसकी वजह से ये हो रहा है और मैं इस चीज को रोकने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे में। और एक्सपेरिमेंट भी मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे, ऐसे बुलेट कर करके, कि मेरे 2 एक्सपेरिमेंट्स थे, एक में पीसीआर वगैरह यूज करना था और एक में ट्रैप, जेल ट्रैप ऐसे और माइक्रोस्कोपी थी, तो मैंने उसको भी ऐसे पॉइंट में डिवाइड करके लिखा था, मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन और बहुत इजी लैंग्वेज में, कि लगे कि हाँ किसी सच्ची में बीएससी के बच्चे ने ही लिखा है। और ये सब तुम्हें आइडियाज कैसे आए थे? रिसर्च पेपर पढ़ के ही तुम्हें ये सारे आइडियाज आए? हाँ, आइडिया मैंने वही, जैसे मैंने कहा था कि आप मैंने पढ़ने के लिए शुरू कहीं और से किया था, फिर धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये एक नया नाम आ रहा है, क्लस्टरीन बार बार हर जगह सामने आ रहा है, तो ये पढ़ के देखती हूँ। फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे उसके बारे में फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप हुआ। और मेरा आइडिया हमेशा रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखते हो तो हमेशा उसी जगह से आए, जैसे मैंने बताया कि वो फ्यूचर डिस्कशंस या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहता है हर एक रिसर्च पेपर में, तो आप वो पढ़ लो। अगर आपको लगे कि हाँ इसके साथ मैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक साथ कोलेट करके कुछ लिखती हूँ तो वही बेटर है, क्योंकि आप एक खुद से एक आइडिया लाना बहुत डिफिकल्ट है। एक ऑलरेडी बिल्ड आइडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग पहले से पुट कर देते कि अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है, तो उसको आप अटैच कर दो अपने प्रॉब्लम के साथ और आपका आ जाए। Okay, after like during the time of interview only, they will ask you to prepare a research proposal, and depending upon आपका guide क्या है, क्या काम करता है, आप उसके basis पे you can prepare a research proposal and उसको present करना होता है आपको। Okay. जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड भी एक इंटरव्यू होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल आपने प्रिपेयर किया है रिगार्डिंग दैट आपको काफी सारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं उससे रिलेटेड, किस तरीके से आप इस काम को कंडक्ट करोगे, राइट? आप एक 5 साल की PhD कर रहे हो तो पूरे टेन्योर में किस किस टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या काम कर लेना है, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट। और क्यों आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज किया है, क्या बेनिफिट है उसका, क्या आप तक उस पर कोई काम हो चुका है, अगर हो चुका है तो कितना काम हो चुका है, और आप क्या नया चीज उसमें लेकर आ रहे हो, ये सारी चीजें जो आपको उसमें डिस्क्राइब करना होता है।
तो एक रिसर्च प्रपोजल का जो लेआउट होता है, इट इज लाइक मींस सिमिलर टू रिसर्च आर्टिकल बेसिकली। अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो तो लाइक उसमें इंट्रोडक्शन रहता है, लिटरेचर रिव्यू रहता है, उसके बाद मेथोडोलॉजी रहती है, राइट, डिस्कशन रहता है। तो ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी जो टाइटल्स रहते हैं, ये आपके उसमें भी रहेंगे प्रपोजल में, and depending upon that आपके questions. For the first mail, it's better not to write the SOP, just write your research interest and everything. If the professor is interested, then they will ask to write like SOP, or they will give you some paper of theirs to read and write a SOP or something. So when you are writing the SOP, just don't write what you read in the paper. Like majorly, just don't write that thing. It's like write what you understood and write what's your conclusion and how you think that this work can be exceeded. Okay, if they are giving you their paper and telling you to write the SOP. Okay, SOP is majorly your area of interest and how it is connected to their work. Okay. So while writing the SOP, it's better to keep this thing in your mind. So basically, how to write the SOP? Like you have to read a number of research paper, and then whatever you want to do, you have to conclude that, and what you have understood, you have to write that also. Yep. Yeah, right. Exactly. Like in the sense ki, like if you are reading their papers, like if they're asking for an SOP, just write about what they worked, like read about what they have worked and until now, and like make a conclusion out of it and correlate it with your interest or what you have done before. Okay. So it's like majorly 2.5 paragraph or 3 paragraphs max. But the thing is that should be very precise and, not revolving around, just precise manner. Okay, so in 2.5 paragraph, and just you have to write just like we normally like writing any paragraph. So you just have to write that. Yeah, that's as simple as that. But the thing is, it should be very informative and precise. Like they don't want to know that what they have written in the paper, because they have written their own paper. It's like what conclusion you have drawn and how you are connecting it with your stuff. So सबसे पहले आपका एक ब्रॉड थीम होना चाहिए कि आपको इसी चीज पे वर्क करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप किसी को अप्रोच कैसे करें। मान लीजिए एक एक्स साइंटिस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो मींस माइक्रोबायोलॉजी, लाइक माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी बिग वर्ड, बट इफ वी वांट टू रिसर्च इन स्पेसिफिक एरिया लाइक ऑन स्पेसिफिक बैक्टीरिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस साइंटिस्ट का आप एक बार पढ़िए कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा ब्रॉड अपना नॉलेज बढ़ाइए। देन उसके हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं उससे लिंक करते हुए थोड़ा सा आपको ना रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। सो उसके लिए आप क्या करिए, NCBI या पबमेड की साइट पे जाइए, डायरेक्ट वो कीवर्ड डालिए जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन पे लिंक करके आप अपने एक प्रपोजल बना सकते हैं। प्रपोजल की 4 चीजें होती हैं, 3-4 चीजें होती हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, थर्ड व्हाट इज नॉट नोन, एंड फोर्थ हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो ये 4 चीजें होती हैं प्रपोजल बनाने की, और यही एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। तो कैसे, मतलब स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या रिसर्च करनी है? यही सब पेपर्स देख के फिर वो अपना थोड़ा ब्रेन ओपन करेगा और उसी से ही मतलब उसको समझेगा कि क्या उसको रिसर्च करनी है। एग्जैक्टली। सो जैसे हम MSc में आ जाते हैं, MSc के बाद थोड़ा हम नेट निकालते हैं, तो 80 to 90% बच्चे यही सोचते हैं कि वी वांट टू डू PhD एंड समथिंग लाइक रिसर्च। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखना चाहिए, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था, तो मेरा माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट था। सो एज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इम्यूनोलॉजी ऑल्सो, एंड आगे आप साइंटिस्ट को सर्च कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाते हैं, मीन्स दे आर द ड्राई लैब, they have to only do the data analysis and something. So वो रिसर्च पे इंटरेस्ट होता है आपका, किस पे जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आपका जो बैकग्राउंड होता है या जहाँ से मास्टर्स होती है, जिसमें आप फोकस उसी पे करिए, क्योंकि आगे आपको ज्यादा हेल्प मिल पाएगी उसमें। मनीष में क्या रिसर्च प्रपोजल देना होता है अपना? नहीं, बेसिकली एम्स में तो ऐसा नहीं है, हाँ, बट जो है आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि गाइड
ये पूछते जरूर हैं अगर कि क्यों आप इस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहते हैं, आप क्यों इस काम को चूज किया है। तो आप अगर को पता है बेसिकली कि देखिए आप पहले जितने भी लिटरेचर हैं जिस गाइड के अंदर जाए उसको लिटरेचर पढ़िए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाता है आराम से कि ये यहाँ पे काम क्या चल रहा है, और मुझे अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे क्या बताना होगा कि ये चीजें हैं, हम ये भी कर सकते हैं, कुछ अपने आइडिया भी बता सकते हैं। अगर आप अपने आइडिया देते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, गाइड आपको अप्रिशिएट करेगा और आसानी से आपका सब चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में। इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं वही। ओके, सो उसके बाद फिर आपको गाइड के साथ डिस्कस करके अपना सब कुछ सबमिट करना पड़ता है विद इन 6 months, वो फिर बात का प्रोसीजर है। उसके अलावा आप खुद का बताना चाहेंगे कि आपकी क्या रिसर्च चल रही है फिलहाल?